इफ यू लव चॉकलेट देन आज के ट्यूटोरियल आपके लिए है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक नेकेड चॉकलेट केक जिसमें होगा एक बहुत ही मॉइस्ट एंड सॉफ्ट स्पॉन्ज, सिल्की गनाश एंड वेलवेटी चॉकलेट मूस. Hey guys, I'm Chef Aruna from Truffle Baking Academy, where we help you to become a professional pastry chef in just 6 months. Also, the seats for 2024 March batch are filling out fast, so click the link in the description area to inquire. तो चलिए शुरू करते हैं. We'll start with making the chocolate sponge, and for that we'll sieve all the dry ingredients in this big bowl, starting from all-purpose flour, and followed by castor sugar, natural cocoa powder, and baking soda. अब हम एक दूसरे बोल में अपने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल एंड फॉलोड बाय मिल्क, मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस एंड वाटर. अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे बाय एडिंग द लिक्विड मिक्सचर टू द ड्राई मिक्सचर ग्रेजुअली एंड फॉर्म ए स्मूथ बैटर. जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बैटर रेडी है. अब हम इसे इन बेकिंग टिन्स में इक्वली पोर कर देंगे, जो कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था. And bake them at 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Meanwhile, let's make the dark chocolate ganache and the chocolate mousse. To learn how to make the chocolate ganache, you can check out our eggless chocolate mousse cake recipe, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया पे मिल जाएगी. So I have taken out 100 grams from the chocolate ganache, and now we'll start beating this whipping cream until it has soft peaks. अब हम इस चॉकलेट गनाश को whipped cream में फोल्ड कर देंगे. Now we'll transfer this mousse into a piping bag. So all the elements are ready for the cake. Now let's move on to the assembly. So our sponges have baked properly and have completely cooled down. Now let's demold it and cut the domed part. Now in this cake base, we'll spread some ganache and place one of the sponge. Then soak it with the vanilla soaking syrup, which I made by mixing vanilla essence and water. अब हम एक OHP शीट को around the sponge place कर देंगे like this. इससे हमारे layers अच्छे से set हो जाएंगे. अब हम ganache pipe करेंगे. Followed by the chocolate mousse. Then place the second layer of sponge on top and repeat the same process as before. For the top, we'll spread some of the chocolate ganache. So our cake is almost ready. We'll keep it in the fridge for 25 to 30 minutes so that ganache और mousse अच्छे से set हो जाए. So our cake has set properly. Now we'll carefully remove the OHP sheet. And pipe dollops of the ganache around the top edge of the cake using 1M nozzle. Lastly, we'll sprinkle rainbow confetti on top. So with this, we are done with the easy and naked chocolate cake. I hope you guys like this recipe. So do like, share and subscribe. Oh, sorry. And with this, we are done with the easy and naked chocolate cake.
आई होप यू गाइस लाइक दिस रेसिपी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपके लिए ऐसे ही इजी रेसिपी लेके आऊंगी। टिल देन कीप बेकिंग।